Hello everyone, welcome to my channel. If you are new to this channel, please make sure to subscribe the channel. Today I am going to explain question number 7 of exercise 8.1 Introduction to Trigonometry chapter number 8. If cot theta is equals to 7 upon 8, evaluate. First part is 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. Second part is cot square theta. पहले हम ट्रायंगल बना लेंगे. दिस इज ट्रायंगल. ये है 90 डिग्री. 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड हो जाएगी हाइपोटेनिस. ये है एंगल थीटा. एंगल के सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर. एंगल के साथ वाली साइड हो जाएगी बेस. गिवन कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 8. कॉट का रेशियो क्या होता है? बी अपॉन पी, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस क्या है? 7. परपेंडिकुलर इज 8. So here base is 7, perpendicular is 8. We need to find hypotenuse. So by using Pythagoras theorem, we'll find hypotenuse. So Pythagoras theorem states that in a right triangle, square of hypotenuse side is equal to the sum of the squares of other two sides. So hypotenuse square is equals to sum of the squares of other two sides. No, perpendicular square plus base square. Hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. Hypotenuse square is equals to perpendicular is 8. Perpendicular square will be 8 whole square plus base is 7. Base square will be 7 whole square. Hypotenuse square is equals to 8 whole square is 8 8 is 64 plus 7 whole square is 7 7 is 49. Hypotenuse square is equals to 64 plus 49 is 113. Hypotenuse is equals to अंडर रूट 113. 113 अंडर रूट में ही रहेगा क्योंकि 113 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. हियर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. हियर a इज इक्वल्स टू 1, b is equals to sin theta. So a square will be 1 square minus b square will be sin square theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta is also in the form of a plus b into a minus b is equals to a square minus b square. So a square will be 1 square minus b square will be cos square theta. So is equals to 1 square is 1 no, minus sin square theta upon 1 square is 1 minus cos square theta is equals to 1 minus sin square theta. साइन का रेशियो क्या होता है? p अपॉन h. p क्या है? 8. h क्या है? अंडर रूट 113. साइन थीटा इज इक्वल्स टू 8 अपॉन अंडर रूट 113. सो साइन स्क्वायर थीटा विल बी 8 अपॉन अंडर रूट 113 होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. 1 माइनस कॉस का रेशियो क्या होता है? b अपॉन h. b क्या है? 7. h क्या है? अंडर रूट 113. कॉस थीटा इज 7 अपॉन अंडर रूट 113. कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 7 अपॉन अंडर रूट 113 होल स्क्वायर. 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 upon under root 113 whole square is equals to 1 minus 8 whole square is 8 8 is 64 upon under root 113 whole square is square root will get cancelled 113 upon 1 minus 7 whole square is 7 7 is 49 upon under root 113 whole square is square root will get cancelled 113 is equals to LCM is, यहाँ पे LCM ले लेंगे. LCM is 113. 113 into 1 is 113 minus write as it is 64 upon LCM ले लेंगे. LCM is 113. 113 into 1 is 113 minus write as it is minus 49. 113 will get cancelled. 113 minus 64 is 49 upon 113 minus 49 is 64. So 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta is equals to 49 upon 64. Second part is
cot square theta. Cot theta is equals to 7 upon 8. No, cot square theta will be 7 upon 8 whole square. So cot square theta is equals to 7 whole square is 7 7s are 49 upon 8 whole square is 8 8s are 64.